basically, if you are an Indian, you have this privilege of half price. So I showed my passport and I got the ticket for half the price of foreign ticket. Hello. Hello. No photo, no video. No video. This is not recording. This is. Good morning guys, it's day 5. Good morning from Sigiriya. और अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि कल मैंने ये साइकिल लिया था, ठीक है, ये एक साइकिल और वहाँ पर ये दूसरा साइकिल, 2 साइकिल हमने रेंट किया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लॉक लगा हुआ है, इसकी चाबी कहीं खो गई है मेरे से। आई कैन नॉट फाइंड द कीज। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था रूम में चाबी ढूंढने की, पर कहीं पे नहीं मिला। मेरे पॉकेट में, बैग में कहीं पे नहीं दिख रहा। तो अभी ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे फिक्स किया जाए इस प्रॉब्लम को पता नहीं। तो आपको चलो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो ये यहाँ का करेंसी है, बेसिकली दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू करेंसी, 5000 रुपये, एंड इसकी कीमत इंडियन करेंसी में 2000 रुपीज़ है। यहाँ का 2.5 रुपये इंडिया का 1 रुपया होता है। तो ये 50 की नोट है, ये 1000 की नोट है। ये यहाँ का श्रीलंकन रुपीज़ है, LKR कहते हैं इसे। और ये यहाँ पर कुछ चिल्लर भी है मेरे पास। ये 5 का कॉइन है, ये 10 का कॉइन है, और ये सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 रुपी। यहाँ पे ATM से अगर पैसे निकालता हूँ तो मेरे को कुछ अराउंड 2.35 2.4 का रेट, 2.4 तो कहीं नहीं मिला, 2.35 से लेके 2.38 का रेट मिल रहा है, प्लस 5% टैक्स भी लग जाता है। 50,000 श्रीलंकन रुपीज़ निकालता हूँ तो यूजुअली आई शुड बी चार्ज 20,000 रुपीज़, बट 21,000 रुपीज़ लग जाता है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है। तो ठीक है, और अभी देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। अभी थोड़ा बाहर जाके एक्सप्लोर करता हूँ और सPeak जाके वहाँ पे आप वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली मेरे को साइकिल की चाबी मिल गई और मैंने इसको खोल दिया। चाबी थी। A few inches later. Okay, so I had my breakfast at Sigiriya cafe. Now I am moving towards the sPeak on my bicycle. It's a straight road from here. So as you guys know, this is my first international trip and first time in Sri Lanka, and I have never traveled solo out of India. In fact, I have never traveled out of India. People do travel solo across the world, and I wonder how they manage to do that. But now I know why traveling solo is the best option. So for example, today me and my friend were supposed to come here together, but my friend for some reason he was working late night and he couldn't wake up, and it's 9 in the morning and we are supposed to go to the sPeak in Sigiriya Mountain. But even after trying a lot, he didn't wake up, so I decided to come here alone. And the best part about traveling solo is that you don't need to depend on anyone. You have your own time. You can do whatever you feel like, wake up at whatever time you want and go to bed. Visit places whichever you feel like. You can skip places which you don't want to go. Travel on your own as you wish. So I could have rented a bike or a cycle, so it's my choice. That's the best part about solo traveling. You are independent, you are not bound by any boundaries, but there are some downsides as well. Sometimes solo traveling can be a little expensive, especially in places where there is no hostel facilities. The main expenses are for travel and for hotel. If you have someone to share the expenses, to share the room. So for example, we rented a room for 1500 Sri Lankan rupees, and we can divide that in amongst us like 2 people. Expenses get splitted up, so in that way it's a little bit cheaper, but then you don't get that liberty to have someone with you. So if you have someone with you, you can definitely rely on them for some pictures or something. You definitely feel like you want someone, and that is when you feel lonely if you're traveling solo. So that is some of the downsides, but nevertheless people across the world travel solo, and I think after this trip I will give it a try, traveling solo in some international destination, and let's see how it works out to be. So I am heading towards the sPeak right now. Let's go. Okay, so that is the ticket counter, the checkpoint, and that's from where you get in. So I'll stand in the queue.
So I got my ticket. This is the ticket. I had to pay 2715 LKR, 2700 LKR. That is like the half price of the foreign ticket. Basically, if you are an Indian, you have this privilege of half price. So I showed my passport and I got the ticket for half the price of foreign ticket. So yeah, now I am heading towards the entrance gate, which is like 100 meters from here. Let's go. तो मैंने अभी एक चीज़ नोटिस किया है. दिस टिकट इंक्लूड्स 3 सेक्शन. सो यू हैव एक्सेस टू दिस 3 सेक्शन: वेस्टर्न गेट, मिरर वॉल एंड म्यूजियम. सो यू डोंट नीड टू purchase separate ticket for every time you enter a new place. All the 3 places are covered. And also polythene is not allowed, so they took off the sticker from my bottle, which was a plastic. Plastic bags are not allowed here. It's a good thing to keep the environment clean. It's currently 9:53 AM. तो दोस्तों मैं अभी चल रहा हूँ लायंस गेट, लायंस पीक पे. लायंस रॉक कहते हैं वहाँ पे. लायंस पीक है, उसके ऊपर ट्रैक करने जा रहा हूँ. वहाँ का एंट्रेंस गेट है और मुझे पता नहीं इसकी ऑडियो कैसे आ रही है. मैं ट्राई कर रहा हूँ. ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं इंस्टा 360 1x से शूट कर रहा हूँ और पता नहीं ये व्लॉग कैसे आने वाला है. और आगे मेरे को पिक नज़र आ रहा है. धूप काफ़ी तेज़ है और मैं कैप और सनग्लासेस कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ. यहाँ पे ड्रोन उड़ाना कतई मना है. एंट्रेंस गेट पे ही लिखा था कि नो ड्रोन जोन. यहाँ पे आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते. हालांकि मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे ड्रोन से इसका शॉट लिया गया है. अंदर से उड़ा नहीं सकते आप, बट बाहर से डेफिनेटली उड़ा सकते हैं. और ये मेरे पीछे आप लायंस पीक है. तो यहाँ पर ये वॉकवे है ऊपर जाने के लिए. माना ये जाता है कि यहाँ ये जो लायंस पीक, लायंस रॉक कहते हैं, कोई राजा को यहाँ पर अपना पैलेस बनाना था कि जो पहले मोनेस्ट्री हुआ करता था, वो मोनेस्ट्री यहाँ पे था और राजा को यहाँ पे उसका खुद का राजमहल बनाना था. उन्होंने जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनसे बात की और बात करने के बाद यहाँ बाजू में पेदुरंगला माउंटेन टॉप भी है. वहाँ पर उनसे जाकर कहा कि वहाँ आप चले जाइए और वहाँ जाकर आप बना लीजिए. मॉनेस्ट्री वहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर पॉन्ड है. सुबह सुबह आ जाना बेटर होता है. जैसे दिन चढ़ते जाते हैं यहाँ गर्मी बढ़ते जाती है. कुछ दिख नहीं रहा है खास. बस चलते हैं आगे, आगे बढ़ते जाते हैं. ये तो ऊपर चढ़ना भी चालू नहीं किया है ठीक से और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, थका देती है गर्मी. कैप भी नहीं लाया और सनग्लासेस भी भूल गया. और ये यहाँ स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ. सो दीज आर द स्टेप्स फॉर गोइंग अप. यहाँ पर ये केव दिख रहा है. दिस इज द केव काइंड ऑफ अ थिंग. This is a one single rock, markings for what's where, and these are the stairs, entrance between the 2 rocks. Wow. So this is the welcome rock. Hello. Hello. No photo, no video. No video. और ये ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा. नीचे गार्डन है, गार्डन वाला एरिया, और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी है. पर फिलहाल हम ऊपर जाएंगे. यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है. और इतनी मशक्क़त के बाद फाइनली हम पहुँच गए. मुझे लगा पहुँच गया था, पर नज़र डालने के बाद पता चल रहा है और भी सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए. So this is the lion's paws, the lion's mouth, and you have to go inside the lion's mouth and get in. So I'm almost there at the top, and that's the Pidurangala rock. This is the Sigiriya rock. So earlier the monastery was here. King at that time asked Buddhist monks to shift the monastery on that rock. दोस्तों फाइनली पहुंच गया सिगिरिया माउंटेन टॉप पे. और यहाँ आने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह का. This is top of the mountain. ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह से है और वहाँ दूर व्हाइट कलर का बुद्धा स्टैचू दिख रहा है. वो है सिगिरिया टेम्पल. पता नहीं जाऊंगा या नहीं, कुछ यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है. सो गाइस, द व्यू फ्रॉम टॉप इज जस्ट अमेजिंग. 4 of us here on the top of the mountain. The view is so cool. So I hope you guys like this video. Do visit this place if you're coming to Sri Lanka and you're nearby Kandy or Dambulla. This is Sigiriya Fort. Sigiriya Rock, and
You can always come here. It's a nice place. Hit the like button if you have really liked this video, and subscribe to my channel if you are new to my channel, and also follow me on Instagram for more such amazing adventure tours and stories. I keep updating over there. So this is Abhijit signing out. Bye bye.